simple antibiotics such as nitrofurantoin या macrobid, Bactrim या Septra, आपके fluoroquinolones such as Cipro या levofloxacin. Then you come to your cephalosporins, which you have a lot of options, simply from amoxicillin augmentin to cefaclor, cefdinir, cefpodoxime. You have several options there. ड्यूरेशन यूजली रिकमेंडेड ये होता है कि फीमेल्स का 3 to 5 days हो फॉर सिंपल सिस्टाइटिस और मेल्स का एटलीस्ट 7 days। मेरा नाम डॉक्टर ओनाइज़ा है, मैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शियस इलनेस है एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स में। यूटीआईज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिंपल सिस्टाइटिस या फिर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सिंपल सिस्टाइटिस का मतलब है कि इन्फेक्शन लिमिटेड है ब्लैडर तक, जबकि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में वो असेंड कर चुकी है एंड इट इज नाउ इन्वॉल्विंग द यूरेटर्स और द किडनीज। इन दोनों के सिम्टम्स भी मुख्तलिफ होते हैं। सिंपल सिस्टाइटिस में डिस्यूरिया या पेनफुल यूरिनेशन, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, सुपरप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, ग्रोस हीमाचूरिया। एल्डरली पेशेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि दे आर कंफ्यूज्ड या फिर रिकरेंट फॉल्स हो रही हों। समटाइम्स दैट इज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस के सिम्टम्स अ लिटिल बिट मोर सिस्टमिक होते हैं, फीवर, चिल्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, फ्लैंक पेन या सीवियर टेंडरनेस। उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। यूरिन एनालिसिस ऑब्टेन करना होता है, जिसके लिए रिकमेंडेड होता है कि मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल, और वो इसलिए कि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं कंटेमिनेशन फ्रॉम यूरोएपिथेलियल सेल्स। यूए में क्विक टेस्ट जो होता है वो डिपस्टिक होता है, जिसमें हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन सच एज द नाइट्राइट्स और ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज, और दीज टू इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंड पार्ट जो होता है यूरिन एनालिसिस का वो है माइक्रोस्कोपी। उसमें हम वाइट ब्लड सेल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, and if you see more than 10 WBCs in under microscopy or the urine sample is not contaminated, it likely indicates an infection as well. Last part जो है evaluation में वो है urine culture, और वो indicated जब होता है जब patient symptomatic हो। urine culture में आपने अक्सर देखा होगा कि वो रिपोर्ट ऐसे होती है कि 10 to the 5th CFU या colony forming units of a single bacteria. This just indicates that there is bacterial growth and sometimes can be altered अगर आपने पहले से antibiotics दी हुई हैं। लास्टली हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की मैनेजमेंट इज यूजुअली इंडिकेटेड इन एन इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन सेटिंग, और वो इसलिए कि दे रिक्वायर आईवी एंटीबायोटिक्स। सिंपल सिस्टाइटिस हाउएवर आप मैनेज कर सकते हैं इन द आउटपेशेंट सेटिंग। सिंपल सिस्टाइटिस की जस्ट मेक श्योर कि पेशेंट डज नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एन MDRO यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, या रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन हुई हो, या रिकरेंट एंटीबायोटिक के कोर्स हुए हैं जिससे वो गेन कर सकते हैं म्यूटेंट बैक्टीरिया। अगर ऐसा कोई केस नहीं है देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सिंपल एंटीबायोटिक्स सच एज नाइट्रोफुrantoin या macrobid, Bactrim या Septra, आपके fluoroquinolones such as Cipro या levofloxacin. Then you come to your cephalosporins, which you have a lot of options, simply from amoxicillin augmentin to cefaclor, cefdinir, cefpodoxime. You have several options there. Duration usually recommended ये होता है कि females का 3 to 5 days हो for simple cystitis और males का at least 7 days of treatment हो। And that usually you do not require a test of cure, यानी आपको repeat testing या repeat urine culture की ज़रूरत नहीं होती if the symptoms have resolved. Let me know if you have any questions or concerns. I'll be happy to get back to you.